students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is plant tissues. How many types of tissues does plant have? What are their functions and what are they called? Let's begin with the chapter. The concepts to know in this chapter are plant tissues, meristemic tissue, permanent tissues, simple permanent tissues and complex permanent tissue. All living organisms, plants and animals are made up of cells. A unicellular organism, also known as a single-celled organism, performs all basic life activities like digestion, respiration, etc. by a single cell, example, amoeba. On the other hand, multicellular organisms, plants and animals have millions of cells which are grouped together to form tissues. These tissues further get specialized to carry out different functions. So, tissue can be defined as a group of similar cells performing the same function and having a common origin are called tissues. तो जितने भी टाइप के plants या animals होते हैं, all the living organisms, be it multicellular, unicellular, they all perform basic life activities like digestion, respiration. Unicellular है जैसे कि अमीबा, वो भी सेम एक्टिविटीज़ करते हैं. मल्टीसेलुलर है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. They also do similar kinds of activities. Ways could be different, but all the living organisms, be it single-celled or multicellular, they perform all kinds of functions. So all the tissues, they can be grouped together. Similar kinds of cells, they perform the same kinds of functions having common origin, and these are tissues. The term tissue was given by Xavier Bichard. The branch of biology which studies tissues is called histology. तो आपके जो ये tissue नाम दिया गया था, it was given by Xavier, and the branch of biology which studies tissues is known as histology. Now, level of organisms and living organisms can be understood or understand by flow chart given below. Cells, they combine together to form tissues, then tissues combine together to form organs, organs combine together to form organ system, and organ systems combines to form the organisms, plants और animals. तो ये पूरा का पूरा आपका एक चार्ट है जो बताता है लाइफ की बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से होता है. सबसे पहले सेल्स, बहुत सारे सेल्स बन के टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज बन के एक ऑर्गन बनते हैं या मल्टीपल ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से फिर बाद में आपका क्या बनता है कलेक्टिवली एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल्स. So in this chapter we will study about different tissues found in plants. Let's begin with plant tissues. There are different types of plant tissues. Some of them are divided throughout life to perform different functions like growth and reproduction. अब आपके बहुत सारे plant tissues होते हैं, they are divided together or throughout their life ताकि वो अलग अलग type के functions को active कर सके, perform कर सके like growth and reproduction. Now let's see how many types of plant tissues do we have. On the basis of the dividing capacity, plant tissues can be divided into two fundamental types as follows. So plant tissues are divided into two tissues. One is meristemic tissues which are capable of division, and then we have permanent tissues which are incapable of division. Now the meristemic tissues which are capable of division are of three types: apical meristems, intercalary meristems, and then we have lateral meristems. Now these permanent tissues are further divided into two: the single permanent tissues and the complex permanent tissues. The single permanent tissues are compound or composed of single type of cells, and the complex permanent tissues are composed of more than one type of cell. Now these simple permanent tissues are further divided into two: the protective tissues which consists of epidermis or the cork, and the supporting tissues which consists of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. The complex permanent tissues which are composed of more than one type of cells are the conducting tissues, the xylem and the phloem. So these are the two tissues and their further classifications. Synthesizing information. Plant tissues are composed of cells that are similar and perform a specific function. Tissues combine with together to form
organs. अब आपके plant tissues होते हैं, ये आपके collectively they are composed of various kinds of cells जो आपके अलग अलग टाइप के functions को perform करते हैं, and then tissues further on combine together to form the organs. Now let's study about the meristemic tissues. A group of young plant cells that have the capacity of dividing is called meristemic tissue. Plants grow only in those regions where meristemic tissues are present. These tissues are commonly called meristems. Now there are the group of young plants or cells which are capable of dividing. These are known as meristemic tissues. ये जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं दे ग्रो उन्हीं रीजन्स में जहां पर मेरिस्टेमिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज टिश्यूज आर कॉमनली कॉल्ड एज मेरिस्टेम्स. Now, what is the location of meristems? The meristemic tissue is found at all growing points of a plant, such as the tip of roots, stems and branches. तो जहां से आपके plants grow करते हैं या plant के अलग अलग parts grow करते हैं, वहां पर आपके meristemic tissues, for example tips of roots, stems और branches, इन सभी locations पे आपको meristems मिलेंगे. Now let's see what are the characteristics of meristems. The features of meristemic tissues are as follows. Number one, the shape of cells may be round, oval, polygonal और rectangular. तो इन चार टाइप के shapes आपको meristemic tissues में मिलेंगे. These are round, oval, polygonal and rectangular. Then the cells are living, immature, have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. इन्हीं सेल्स के जो होंगे, ये जो सेल्स होंगे दे विल बी लिविंग, इमैच्योर होंगे, कंप्लीटली फॉर्म नहीं होंगे, दे विल हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड द सेल्यूलोज वॉल्स एंड दे विल हैव अ प्रोमिनेंट वेरी मच विजिबल nuclei. Then the vacuoles are either absent or very small. Cells of these tissues are tightly packed with no intercellular spaces. ये भी आपका एक मेरिस्टेमिक सेल का ही एक डिस्प्ले आपको दिया गया है. बीच में आपके इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे. They'll be tightly packed. And these tissues divide to form new cells which differentiate to give the permanent tissue. अब इन्हीं मेरिस्टेमिक टिश्यूज से आपके नए सेल्स फॉर्म होते हैं और उन्हीं नए सेल से फिर आपके परमानेंट जो सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. Now let's see different types of meristemic tissues. On the basis of positions where they are present in the plant, meristemic tissues are of the following three types. Number one is apical meristem. These are found at the growing tip of the stem, root and their branches. It increases the length of the stem and root. अब apical meristem आपको कहाँ पे मिलेगा? जो भी आपके stem, root और branches है, जो आपके उसके जो growing tips है, उसके एकदम edges पे आपको ये देखने को मिलेगा. Then you have the intercalary meristem. These are present at the bases of leaves or internodes of stems. This tissue is helpful in longitudinal growth of plants by adding primary tissues. अब intercalary meristem होते हैं, या आपके leaves या फिर internodes जो होते हैं stems के, उनके बीच में ये देखे जाते हैं, उनके basis पे देखे जाते हैं. They are helpful in the longitudinal growth. जो लंबाई होती है plant की, उसमें ये help करते हैं by adding the primary tissues. And then third we have the lateral meristem. These are found below the bark and in the lateral side of the roots and stems. The girth of the stem or root increases due to lateral meristem. अब आपका जो मोटापा होता है स्टेम का, कितना मोटा स्टेम है, जो वो किससे पता चलता है, किसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मोटा होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम. ये bark में आपका प्रेजेंट होता है एंड एट द lateral side of the roots and the stems. Now let's see what are the functions of meristemic tissue. Number one, it is a primary tissue that acts as a parent tissue from which other tissues originate. Second, it is helpful to grow plant in length as well as in girth, thickness. New cells grow at the injured site, thus help in the healing up, and it helps to grow by continuing producing new leaves, branches, flowers, fruits, roots and root hair. तो मेरिस्टेमिक टिश्यू किस किस चीज में हेल्प करते हैं? इट हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. देन दे हेल्प इन द थिकनेस. कितना थिक होगा आपके प्लांट का स्टेम या ब्रांच या पूरा का पूरा स्टेम. इन दैट इट हेल्प्स न्यू सेल्स जो होते हैं वो इंजर्ड साइड, जो आपकी हार्म्ड साइड या कोई जख्मी साइड होती है प्लांट की, वहां से ग्रो कर जाते हैं, तो हीलिंग अप वाले प्रोसेस में हेल्प करते हैं. एंड दे कंटिन्यू टू हेल्प इन फॉर्मिंग और ग्रोइंग new leaves, branches, flowers, fruits, roots and root hair. Synthesizing information.
The function of the meristemic tissue is to produce more cells leading to the growth of the plant. तो meristemic tissue का जो basic और the foremost function जो आप कह सकते हैं वो ये है कि प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स फॉर्म करे ताकि प्लांट और भी ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि कोई भी टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और से लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बनता है? व्हेन सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. Activity 1. Aim to show that the apical meristem caused growth in length of the root tips. Materials required: two same size jars, 2 onion bulbs, scissors, measuring scale and water. Procedure: take the glass jars and fill them with equal amount of water. Place the onion bulbs, one in each jar as shown in the figure. Observe the growth of roots in both the bulbs for a few days. Measure the root length on day 1, 2 and 3. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in a jar 2 by about 1 centimeters. After this step, observe the growth of the roots in both the jars and measure their lengths each day for another 5 days. अब आपको क्या करना है? आपको 2 सेम साइज के जार चाहिए. You need 2 onion bulbs, scissors, measuring scale and water. ग्लास जार्स लीजिए, उनको इक्वल अमाउंट्स पानी से भर दीजिए. अनियन बल्ब्स को दोनों जार्स के बिल्कुल ऊपर रख दीजिए, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, टिप पे रख दीजिए. रूट्स की जो ग्रोथ होगी हर थोड़े दिनों में आप उसको नोटिस करिए. देन मेजर द रूट लेंथ, पहले दिन, दूसरे दिन एंड देन थर्ड डे. Now on 4th day, cut the root tips of the onion bulb on the jar 2 by about 1 centimeter. जार 2 में जो आपका अनियन बल्ब है 1 सेंटीमीटर से उसके टिप को काट दीजिए, रूट को काट दीजिए. After this step, observe the length of the roots in both the jars. इसके बाद आपको क्या करना है? 5 दिनों तक दोनों जार्स में जो आपका ग्रो कर रहा है प्लांट उसको आपको नोटिस करके यहाँ पर लिखना है. अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? The roots of the onion placed in jar 1 have more growth as compared to the onion kept in the jar 2 in which root tips are removed. This is because the apical meristem, which is responsible for the increase in the length, is located on the tips of the roots and stem. If the root tips are removed, as in the case of jar 2, the apical meristem gets lost and the roots stop increasing in length. अब इससे क्या आपको पता चलेगा? जो jar 2 है, jar 1 में आपका यूजुअल ग्रोथ होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी. जार 2 में क्योंकि आपने रूट को कट कर दिया है और आपकी एपिकल मेरिस्टेम रूट्स और स्टेम के ही नोड्स में आपकी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से आपका प्लांट ग्रो करता है. अब आप जार 2 में से आपने अनियन के रूट्स ही कट कर दिए, एपिकल मेरिस्टेम वहां से निकल गया, इसकी वजह से उसकी लेंथ भी ग्रो नहीं करेगी. Activity 1 aim to show that the apical meristem causes growth in lengths of the root tips. Materials required: 2 same size jars, 2 onion bulbs, scissors, measuring scale and water. Procedure: take the glass jars and fill them with equal amount of water. Place the onion bulbs, one in each jar as shown in the figure. Observe the growth of roots in both the bulbs for a few days. Measure the root lengths on day 1, 2 and 3. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this step, observe the growth of roots in both the jars and measure the lengths each day for another 5 days. Lengths: day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, jar 1, jar 2. Observation: the roots of onion placed in jar 1 have more growth as compared to the onion kept in jar 2 in which root tips are removed. This is because the apical meristem, which is responsible for the increase in length, is located on the tips of roots and stem. If the root tips are removed, as in case of jar 2, the apical meristem gets lost and the roots stop increasing in length. Now let's see the permanent tissues. These are the group of cells in which growth is stopped either completely or for the time being. Permanent tissue is formed from the meristemic tissue when it loses the ability to divide. This process of losing the ability to divide and acquiring a permanent shape, size, structure and function by the newly formed cells is called differentiation. अब आपके जो group of cells होते हैं जो आपके which growth is stopped.
या तो कंप्लीटली या फिर टाइम बीइंग के लिए जहां पर आपका ग्रोथ रुक जाता है. परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेमिक टिश्यू जैसे ही इट लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू डिवाइड करता है सेल्स को, जैसे ही उसकी एबिलिटी रुक जाती है वहीं से आपके परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होना शुरू कर देते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग द एबिलिटी टू डिवाइड एंड एक्वायरिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, दिस particular process is known as differentiation. The location of permanent tissues form bulk of the plant body. They are present in all parts except the meristems. अब आपके permanent tissues हर जगह पे present होते हैं, plant के bulk में इनका main function होता है, except for the meristems of the plant. They are found everywhere. Characteristics of permanent tissues. Characteristics of permanent tissues are as follows. The cells do not divide because they become differentiated. These tissues may be living or dead. अब आपके क्या characteristics होंगे, क्योंकि cells ने divide होना बंद कर दिया है, that is why आपकी permanent tissues के form होने की starting हो गई है, hence ये differentiate हो गए हैं, तो इनके जो tissues होंगे they can either be living or dead, but the cells will not divide. These cells have different shapes related to the function they perform. कौन सा सेल क्या function perform कर रहा है उस पर depend करता है कि सेल का क्या shape होगा. And cells of these tissues have thick cell wall, large vacuole and nucleus is displaced to one side. अब इन cells की जो आपके walls होंगे it will be thick, large vacuole होगा और जो nucleus होगा वो एक side पे ही displaced होगा. Now let's see how many types of permanent tissues we have. On the basis of structure, permanent tissues are of mainly two types. One is simple permanent tissue and another one is complex permanent tissue. Beginning with simple permanent tissues. These tissues are made up of only one type of cells that is similar in structure, origin and perform the same function. The simple permanent tissues include protective and supporting tissues. तो आपके सबसे पहले जो simple आपके आते हैं, same type का structure होता है, size भी same type का होता है more or less, function भी ये same type के ही perform करते हैं. Simple permanent tissues में आपके protective और supporting tissues आ जाते हैं. Number one is supporting tissues. These tissues cover the surface of roots, stems and leaves. Protective tissues are formed of thick walled cells and protect plant parts and they are epidermis and quark. अब protective tissues में आपके क्या आते हैं, ये आपके tissues, these tissues cover the surface of your roots, stems and leaves and ये thick wall form कर देते हैं to protect the plants and these are the epidermis and the cork. Now let's see what an epidermis does. This is the outermost layer of the cell in plants. It performs a single layer of cells and protects the underlying tissues. And epidermis of leaves secretes a waxy and waterproof layer called cuticle. अब epidermis क्या होता है? This is the outermost layer of the cell in the plant. Cell का outermost layer होता है ये, single cell layer आपका ये form कर देता है और ये underlying tissues को protect करके रखता है. Epidermis also secretes different kinds of waxy and waterproof layers and we call it cuticle. And then we have the cork. It is found only in older leaves and stems. Those cells are dead and compactly arranged. They form the bark of trees. अब जो आपके trees के bark, outer thick portion होता है, वो जो formation होती है, it happens because of the cork. ये जो cells होते हैं, they are dead and they are compactly arranged. And second type of tissues we have is supporting tissues. They provide support and length to the plants. They are following three types in plants. Number one is parenchyma tissues, second is collenchyma tissues, third is sclerenchyma tissues. Beginning with parenchyma tissues. What is the location? It is found in all the plants. It forms the major tissue of softer plants like epidermis, cortex, pith and leaf mesophyll. It is also present in xylem and phloem. तो आपका जो parenchyma tissues होते हैं, जो आपके plant tissues होते हैं, ये आपके सारे ही plants में देखे जाते हैं. जो softer plants होते हैं, for example epidermis, the cortex, the pith or the leaf mesophyll of the plants, वहाँ पर ये आपके ज़्यादातर major tissues आपके ये देखे जाते हैं and it is also present in the xylem and the phloem. Structure, these are simple living cells with thin wall and single large vacuole. अब इसका जो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, दीज आर सिंपल लिविंग सेल्स, बहुत थिन वॉल होती है एंड दे हैव सिंगल बट लार्ज वैक्यूल. द वॉल ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. इनकी सेल वॉल में आपका क्या होता है, सेल्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं. सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज मे बी ओवल
rounded or polygonal, and cells of these tissues are usually loosely packed with large intercellular space between them. अब cells जो होते हैं इनका cell का structure कैसा होता है? It can be either oval, rounded or polygonal, and the cells of these tissues ये ज़्यादातर loosely packed होते हैं, यानी कि इनमें large intercellular space present होता है. What are the functions? Parenchyma tissue has following important functions. It stores food in the form of starch, proteins, oils and fats. Some cells of the tissue contains chlorophyll and perform photosynthesis. Such type of tissues is called chlorenchyma. अब आपके ये जो parenchymic tissues होते हैं ये खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड फैट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज में आता है. देन वी हैव सम सेल्स एंड टिश्यूज जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द पेरेन्काइमा टिश्यूज जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. सच टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज आर नोन एज क्लोरेन्काइमा. And third, in water plants, large cavities are present in parenchyma cells in order to give buoyancy to plants which help them to float. Such type of tissue is called एरेनकाइमा. अब आपके कुछ वाटर प्लांट्स होते हैं पैरेनकाइमा टिश्यूज में ही जिनमें बहुत ज्यादा कैविटीज होती है विच प्रोवाइड देम द बॉयंसी, द अपवर्ड पुश दैट द वाटर डज टू एनी ऑर्गेनिज्म विच इज पुट इनसाइड इट. तो इस बॉयंसी की वजह से क्या होता है, प्लांट्स आसानी से वाटर के सर्फेस पे फ्लोट कर जाते हैं. एंड सच काइंड ऑफ पैरेनकाइमिक टिश्यूज आर नोन एज एरेनकाइमा. नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज इज कोलेनकाइमा टिश्यूज. Location, it is usually found below the epidermis in stem, petiole and leaves of dicot plants. Collenchyma is usually absent in leaves, stems and roots of monocot plants. तो collenchyma जो आपके tissues होते हैं ये आपकी stem, petiole और leaves के epidermis पे देखे जाते हैं of the dicot plants only. The collenchyma is absent, usually absent in the leaves, stems and roots of the monocot plants. What is the structure of the collenchyma tissues? Cells of the tissue are living, elongated and thickened with cellulose as longitudinal strips at the corners. इसके जो cells होते हैं, इस collenchyma tissue के जो cells होते हैं they are elongated, मोटे होते हैं, cellulose भी present होता है क्योंकि इसका longitudinal जो strip होता है it is at the corners and they have very little intercellular space. That means they are tightly packed. Third, the cells are circular, oval or angular in transverse section. जो cells होते हैं they are circular, oval or angular. What are the functions? Collenchyma tissue has the following functions. Number one, the tissue provides mechanical support, flexibility to plants, and second, the tissue allows easy bending in various parts of the plant like leaf and stem without actually breaking. अब function क्या होता है? ये tissue plant की जो flexibility होती है, mechanical support provide करता है by making the plant flexible. And second, this tissue allows easy bending. अब कुछ पार्ट होते हैं प्लांट्स के जो आसानी से बेंड हो जाते हैं, they don't even break अगर आप उन्हें सॉफ्टली बेंड करते हो तो. So this ability कौन प्रोवाइड करता है? The collenchyma tissues. Now third is the sclerenchyma tissues. What is the location? It is present in stems, veins of leaves, the hard covering of seeds and nuts and the husk of coconut. The fiber yielding plants like jute and flax contain this tissue in abundance. अब sclerenchyma tissues कहाँ पे होते हैं? It is present in the stems, leaves की veins में, hard covering जो seeds की होती है, nuts में and the husk of coconut. ये जो fiber yielding plants होते हैं जैसे jute, flax, उसमें भी sclerenchyma tissue abundance बहुत ज़्यादा उसमें ये देखा जाता है. Structure, cells of the tissue are spindle shaped, long, narrow and dead. Cell wall is thick due to the deposition of lignins, a chemical substance which acts like a cement, striking fibers and hardening them. अब ये जो cells होते हैं spindle shape के होते हैं जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है and then they are long, narrow and dead. They are not living. इसके जो cells होते हैं they are thick because of a chemical substance जो आपका lignins होता है उसके deposition की वजह से which acts like a cement. बहुत ही thick कर देता है. There is no internal space between the cells यानी कि intercellular space बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा tightly packed है. And on maturity these cells lose their protoplasm and become dead. जैसे ही ये plants या tissues आपके mature हो जाते हैं ये cells आपके क्या करते हैं? They lose their protoplasm जिसकी वजह से ये खत्म हो जाते हैं. They become dead. Let's see what are the functions.
Sclerenchyma tissue has the following functions. Number one, it is the chief mechanical tissue which makes plant hard and stiff. Example, coconut husk. अब आपका क्या है, Sclerenchyma tissue की वजह से ही जो आपका प्लांट कभी कभी थिक हो जाता है, या प्लांट का मेन पार्ट, कोकोनट का आउटर पार्ट हस्क होता है, इट इज थिक बिकॉज ऑफ Sclerenchyma tissue. इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड सीड्स एंड नट्स. जो नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उसके बाहर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है. आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, वॉलनट है, अखरोट है, उसके बाहर आपके एक बहुत मोटी कवरिंग है, थिक है, वो एडिबल भी नहीं है. इट इज थिक ऑल्सो. थिक वाई? बिकॉज ऑफ द Sclerenchyma tissue. Let's see the table जिसमें आपको there is a differences between parenchyma, collenchyma and the Sclerenchyma. So the parenchyma tissue cell wall is thin, thickening if present is uniform. Collenchyma tissue में cell wall is thick and the thickening is uneven, and Sclerenchyma tissue में extremely thick cell walls are present. Then the parenchyma tissue cells have distinct nucleus and a large central vacuole. In the collenchyma tissue, the cells have distinct nucleus and dense cytoplasm. Sclerenchyma tissue, the cells do not have a nucleus and cytoplasm, just empty lumen. Then the parenchyma tissue, the intercellular spaces are present between the cells. Collenchyma tissue, no intercellular space is present. Sclerenchyma tissue, no internal space between the cells. Parenchyma tissue provides turgidity to soft tissues. Then you have collenchyma tissues provides mechanical strength and elasticity to soft parts. Sclerenchyma tissue provides hardness, mechanical strength and elasticity to the plant. Then we have parenchyma tissue present in all soft parts of the plant, for example, stems, roots, leaves, flowers and fruits. Collenchyma tissue is located below the epidermis in stems and leaves, and the Sclerenchyma tissue present in shells of nuts, in hard seeds, pulp of pear, etc. So these are the basic differences. ऊपर हमने इसी के बारे में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें भी आपके जितने भी तीनों डिफरेंसेस हैं वो आपको टैबुलर फॉर्म में यहाँ बताए गए हैं. जो आपका तीनों के तीनों टिश्यूज है, बिगिनिंग विद पैरेंकाइमा. जो पैरेंकाइमा होते हैं सेल्स थिन होते हैं, जो आपकी थिकनिंग होती है यूनिफॉर्म नहीं होती है. देन यू हैव कॉलेनकाइमा, उसमें आपके सेल थिक हैं. जो आपकी थिकनिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट इवन, इट इज अनइवन. और लास्ट स्क्लेरेनकाइमा में एक्सट्रीमली थिक हो जाते हैं, और आपके अलग अलग टिश्यूज की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इट इज ऑल्सो एंटायरली डिफरेंट. Now let's study about complex permanent tissues. So these tissues are made up of more than one type of cells having a common origin. Regardless of different appearance, all the cells coordinate to perform a common function, and the main complex permanent tissues are xylem and phloem. तो आपके जो complex tissues आते हैं, इनके क्या characteristics होते हैं? इनकी अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस हो सकते हैं, बट इनका ओरिजिन एक ही होता है, एंड दे ऑल कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन फंक्शन. फॉर एग्जांपल, xylem and phloem are two types of main complex permanent tissues. Now xylem and phloem are both conducting tissues and also known as vascular tissues. Together they constitute vascular bundles. तो xylem और phloem दोनों ही आपकी conducting tissues में आते हैं, and vascular tissues इन्हें बोला जाता है, and both of these xylem and phloem coordinate together to do a common function, and they are collectively known as vascular bundles. Now let's study about them one by one, beginning with xylem. Xylem is a vascular and mechanical tissue. It is located in almost all parts of the plant, leaf, stem and root. तो xylem vascular है, it is mechanical tissue as well. ये almost plant के हर part में, leaf, stem या roots में present होता है. Cells of this tissue are thick walled and many of them are dead. Xylem forms a continuous channel through the roots, stem, leaves and other aerial parts. तो जितने भी बाहर की तरफ, जैसे branches हो गए, stems हो गया, roots हो गए, leaves हो गए, उन सभी में xylem tissues के cells present होते हैं. Now xylem is composed of cells of 4 different types. Now let's see xylem में कितने अलग अलग type के cells present होते हैं. Number 1 is tracheids. These are elongated dead cells with large cavities, lignified walls and tapering ends. They allow conduction of water and minerals from roots to leaves. तो ट्रैकियाज पहले सेल्स होते हैं जो आपके xylem टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं. दे आर elongated, लंबे होते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसफर और कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से लीव्स तक. देन सेकेंड वी हैव वेसल्स और ट्रेकिए.
These are very long tube-like structures formed by a row of cells placed end to end. These cells have the transverse walls between the vessel elements and partially or completely dissolve to form continuous channels or water pipes. They also help in conduction of water and dissolved minerals. फिर सेकेंड जो आते हैं आपके जिनको वेसल्स या फिर ट्रैकिए बोलते हैं, ये भी बहुत लंबे होते हैं. दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक रो टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं एंड टू एंड. एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? देयर मेन फंक्शन इज to help in the conduction of water and dissolved minerals. And third is the xylem parenchyma. These cells are living with thin walls. These store food, sugar and starch and helps in lateral conduction of water. फिर आपके xylem आते हैं. lateral conduction जो होता है water का, उस चीज में ये help करते हैं. And then we have the last one which is xylem sclerenchyma or xylem fiber. These cells are elongated, dead with tapering ends. They possess thickened cell walls with narrow cavities and they help in the conduction of water bodies. Thus, it also provides mechanical support. फिर आपके last आ जाते हैं xylem tissues में जो cells होते हैं. These are the xylem sclerenchyma or they're also known as xylem fiber. इनका क्या काम होता है? इनका main function होता है they help in the conduction of water bodies and इसकी वजह से ही ये mechanical support भी plant को एड करते हैं, सपोर्ट करते हैं. Now let's do an activity. Aim to study the transportation of water through xylem tissue. Materials required: twig of petunia with white flowers, a beaker and red colored water. Procedure: keep the twig in beaker containing red colored water for about 3 hours. Observe the flower. You may see reddish streaks in flower. Now take out the twig of beaker, cut thin sections of the stem and observe one of the sections under the microscope. Observation: you may see that some walls or some cells become reddish whereas some of them remained colorless. It shows that not all cells conduct water. Only few of them called xylem vessels can transport water in plants. अब आपको एक पेटूनिया लेना है जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होने चाहिए. यू नीड अ बीकर एंड कलर्ड वाटर. अब आप क्या करेंगे? आप इस कलर्ड वाटर में आप एक ट्विग डाल देंगे आपके पेटूनिया की एंड देन यू विल धीरे धीरे आप क्या नोटिस करोगे कि आपके कुछ पार्ट्स में जहां जहां पे आपके xylem टिश्यूज प्रेजेंट थे वो उन्होंने तो उस पार्ट को कलर में कन्वर्ट कर दिया है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बट कुछ पार्ट्स आपके नॉन कलर्ड ही रहेंगे बिकॉज नॉट ऑल द सेल्स इन द टिश्यूज प्रेजेंट इन योर प्लांट्स कैन कंडक्ट वाटर. Activity 2. Aim to study the transportation of water through xylem tissue. Materials required: twig of petunia with white flowers, a beaker and red colored water. Procedure: keep the twig in beaker containing red colored water for about 3 hours. Observe the flower. You may see reddish streaks in flower. Now take out the twig out of beaker. Cut thin sections of the stem. Observe one of the section under the microscope. Observation: you may see that some cells became reddish whereas some of them remained colorless. It shows that not all cells conduct water. Only few of them called xylem vessels can transport water in plants. Now next is a phloem. Now phloem is also found in almost all parts of the body of all the plant body. It transports food from leaves to other parts of the plant. Its cells are made up of living cells except phloem fibers. अब आपका phloem आता है. Their main function is to transport food from the leaves to the rest of the plants and सारे ही इसमें living cells होते हैं except for the phloem fibers. Now the phloem tissue consists of 4 types of cells. Number 1 is sieve tubes. These are slender tube-like structures with end walls perforated by numerous pores called sieve plates. Cells have no nucleus and have thin layer of cytoplasm. They transport food prepared in leaves to storage organs and other parts of the plant. फिर आपके sieve tubes आते हैं. इनमें जो आपकी walls होती हैं end to end, इनमें आपके sieve plates होते हैं and these cells have no nucleus और बहुत ही thin layer cytoplasm की होती है and इनका main function क्या होता है? जो भी आपका खाना leaves prepare करती हैं वो आपके स्टोरेज ऑर्गन्स या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ये पहुंचाते हैं. देन सेकेंड वी हैव द कंपेनियन सेल्स.
These are generally associated with the sieve tube. It is a small thin-walled cell containing dense cytoplasm and large elongated nucleus. They control the activity of sieve tubes. अब companion cells क्या करते हैं? ये आपके ज़्यादातर sieve tube के साथ ही associated होते हैं, connected होते हैं, बहुत thin-walled cell होती है, इनमें आपके cytoplasm बहुत ज़्यादा dense होते हैं, and they are very large and elongated nucleus also. ये जितनी भी सीव ट्यूब की एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करते हैं. एंड देन थर्ड वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा. These are thin-walled living cells of parenchyma of phloem. They help in storage of fat, starch, etc. and slow down of lateral conduction of food. अब आपका आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा. इनका मेन फंक्शन होता है जितना भी आपका खाना होता है, फॉर एग्जाम्पल योर फैट, स्टार्च, उनको स्टोर करके रखते हैं एंड दे स्लो डाउन द lateral conduction of food. And the last one is the phloem fibers. These are thick-walled, elongated, spindle-shaped, dead sclerenchymus cells. They provide mechanical strength to the plant. अब phloem fibers का सिर्फ एक ही काम होता है, इनका काम होता है पूरे के पूरे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो ये थे 4 अलग अलग सेल्स जो आपके phloem टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. Now let's see the differences between xylem and phloem tissues. अभी तक जितना भी हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है उसी को आपको ब्रीफिंग में इस टेबल में दे दिया गया है. So let's begin with the xylem and then we'll see the phloem. So xylem conducts water and minerals, phloem conducts food. Xylem conduction is upwards, phloem conduction is upwards and downwards both. In xylem provides mechanical support or strength to the plant parts, and phloem does not provide mechanical strength. Then we have xylem. It contains 4 elements: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers are present. In phloem it contains 4 elements as well, which are sieve cells, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers are present. In xylem all conducting cells are non-living except for xylem parenchyma, and in phloem all conducting cells are living except for the phloem fibers. So यही चीजें हमने पीछे ही पढ़ी थी, इसकी खाली आपको ब्रीफिंग यहाँ पर दे दी गई है, इससे आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. Another table shows you the differences between meristemic and permanent tissues. So the meristematic tissues, cells undergo division, cells are small, living and immature, cell wall is very thin, vacuoles are almost absent, nucleus is large and prominent and helps in the growth of plant parts. On the other hand, the permanent tissue cells normally do not divide, cells are comparatively large, living or dead and mature, cell wall is thin or thick, vacuole is single, large and central, nucleus is less prominent, helps in providing protection, support, conduction of food and water, photosynthesis, etc. तो ये भी आपके पीछे पूरे चैप्टर में आपको जो डिटेल में बताया गया था. फॉर एग्जांपल आपके मेरिस्टेमिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें डिवीजन होता है, परमानेंट में आपको कोई डिवीजन देखने को नहीं मिलता है. देन यह मेरिस्टेमिक जिसमें आपके सेल्स बहुत छोटे होते हैं, दे लिविंग एंड इमैच्योर. ऑन द अदर हैंड परमानेंट टिश्यूज में जो आपके सेल्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू द मेरिस्टेमिक टिश्यूज एंड दे आर लिविंग और डेड एंड दे आर mature. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं. These are just the summarized form of whatever we did in the chapter. Now let's do another activity, activity 3. Aim, observe the different types of plant tissues. Procedure: take a soft green stem, cut thin sections of it with the help of a sharp blade or razor. You can also take the help of your teacher in cutting the section. Keep one of these section on a clean glass slide and cover it with a cover slip. Observe under the microscope to identify parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissues. Draw the tissue you have seen under the microscope and write your observations. Now try to identify xylem and phloem tissues. अब आपको अलग अलग प्लांट्स लेने हैं, उनका सेक्शन आपको कट करना है, डिवाइड करना है. अपनी टीचर की हेल्प आप ले सकते हो. उसको एक साफ ग्लास स्लाइड में रख के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज. जब आप उनका स्ट्रक्चर देख लेंगे, वो स्ट्रक्चर देखकर आप ड्रॉ करोगे कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है, एंड आफ्टर दैट आप जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज हैं उनको भी ऑब्जर्व करिए. Activity 3 Aim. Observe the different types of plant tissues. Procedure: take a soft green stem, cut thin sections of it with the help of a sharp blade or razor. You can also take the help of your teacher in cutting the section. Keep one of these sections on a clean glass slide and cover it with a cover slip. Observe under the microscope to identify parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissues. Draw the tissue you have seen under the microscope and write your observations. Now,
try to identify xylem and phloem tissues. Key terms. Collenchyma, tissues present below the epidermis in young stems and petioles of leaves. Parenchyma, tissues present in almost all the parts of a plant. Phloem, vascular tissues in plants that transports food from leaves to all the parts of the plant. Sclerenchyma, tissues present in the stem and veins of leaves. Tissue, a group of cells similar in structure that working together to perform a particular function. Xylem, vascular tissue in plants for the transport of water and minerals from roots to all plant parts. तो collenchyma, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन अलग अलग प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं एंड दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस एंड दे लोकेटेड आल्सो इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. एंड देन यू हैव xylem and phloem, which are the vascular bundles. They also help in conducting water and the lateral division or lateral conduction of food from the leaves to the rest of the plant body. Now let's have a summary. A group of cells having a similar structure and similar functions is called tissue. Plant tissues are basically of two types, meristemic and permanent. On the basis of their position in the plant body, meristems are divided into apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. On the basis of composition, permanent tissues are of mainly two types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. The three main types of simple permanent tissues in plants are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. The main complex permanent tissues in plants are xylem and phloem. Xylem consists of mainly dead cells. It transports water upwards from the roots to the upper part of the plant, and phloem is composed of living cells. It conducts food from leaves throughout the plant. So in this chapter basically we dealt about different parts of our plant and the plants, how do they conduct water and food from other parts, जिसमें आपके xylem और phloem दो टाइप के टिश्यूज होते हैं which collectively are called as vascular bundles. अलग अलग टाइप के आपके टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो प्लांट को उनका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर जस्ट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, लिविंग, डेड, mature, immature, all these things we read. Just go through this chapter thoroughly and rest of the exercise questions, please do it.